Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So in today's video I'm gonna try full face of tried and tested मेकअप हैक्स जिनको देख देख के ना तो बहुत दिल कर रहा था मेकअप करने को, और ये डेफिनेटली आपके मेकअप के स्किल्स को इन्हांस करते हैं। प्रोडक्ट्स तो अपने फेस पे लगानी होती हैं, लेकिन उनको लगाने की टेक्निक्स अगर आप थोड़ी सी चेंज कर लें तो यानी कहते हैं ना, सियाने की बात सुन के ना ज़रा फ़ायदा हो जाता है। तो आज हम वही करने वाले हैं। आज हम ये हैक्स को फुल फेस को ट्राई करेंगे। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गना स्टार्ट विद फाउंडेशन। अच्छा, मेरे पास अब बहुत सारी फाउंडेशन है। मैंने कहा कौन सी फाउंडेशन ट्राई करूं जो पीपल कैन रिलेट, यू कैन ट्राई। सो आई थिंक मिस रोज की ये फाउंडेशन आई थिंक ऑलमोस्ट सबके पास होनी ही चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुल कवरेज फाउंडेशन आउट देयर। तो हम इसी से कर लेते हैं। वैसे मेरे पास नेवर माइंड, बहुत सारी हैं। अच्छा जी, करना ये है कि ओके यू कैन सी दैट। करना ये है कि हमने फाउंडेशन को डालना है जी पानी में। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आई डोंट वांट टू वेस्ट लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा जी, और आपने फाउंडेशन को पानी में डाल के ना तो फिर अप्लाई करना है। अच्छा, अब इसमें यहाँ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फाउंडेशन ब्रश से ही अप्लाई करनी है, क्योंकि इसमें ब्यूटी ब्लेंडर तो जाएगा नहीं। तो पानी के अंदर है जी फाउंडेशन, इट्स फ्लोटिंग, इट मीन्स दैट दिस फाउंडेशन हैज़ ऑयल इनटू इट। इस फाउंडेशन के अंदर ऑयल है, इसलिए दैट्स वाई द फाउंडेशन इज फ्लोटिंग एंड नॉट सिंकिंग इनटू द वाटर, क्योंकि वो वाटर बेस्ड फाउंडेशन होगी अगर वो नीचे जाके बैठ जाएगी। तो हर तरह की फाउंडेशन पर ये हैक काम नहीं करेगा। नाउ आई हैव ऑल द प्रोडक्ट ऑन द ब्रश विच इज अ lot and I think I'm gonna be in trouble after applying this much foundation. Oh my god, it's gliding so smoothly. I never thought this would happen. I don't need that anymore. Ooh, wow, मेरा स्कार्फ गंदा हो गया. Now this brush is dripping with water, but the foundation is looking pretty good. Now I have seen doing YouTubers, TikTokers saying wow, और मैं कहती शायद मैं कह रही होंगी. This is good. We need to do that more often. Let's move on to the next step. Next आपने करना है ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, और आपने as you can see from my hand, अभी भी मैंने इसको तो जो है इसके ऊपर लगा हुआ वो हम अपने आईज पे भी लगा देते हैं। Oh my god, that's good, that's really good. Next step is to apply concealer, और उसके लिए मैं क्लिनिक की ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। I just love this. अच्छा, अब करना ये है, start with your eyes, go up and come here, then go like this here, take more product again, yeah, I need to go all the way, yes, then again come here around my mouth and come again in the same direction. Now अब यहाँ से क्या करना है, again I need to lift my face and voila, you are a clown. Successfully a clown. I just love it. Let's see, let's blend this. I'm gonna start with this. Trust the process. Trust the process. मेरा स्कार्फ फिर गंदा हो गया, धोना पड़ेगा. Okay, I should have done one side first, just to see कि कोई lifting effect आता है कि नहीं. Now we're gonna move on to the eyes. For that you have to have a brush, and I have already put a product on it. और हमने लेना जी eyelash curler, और उससे हमने बनानी है अपनी crease. Okay. ओहो, इसका हैंडल रास्ते में आ रहा है. I like it. Let's see दूसरी साइड पे इवन होता है कि नहीं. That's the मुझे ये बहुत मसला होता है, मेरी एक साइड जो है ना दूसरी साइड से कभी नहीं मिलती, मुझे लगता है.
नाउ वी गोना डू द बॉटम पार्ट, और उसके लिए हमने यूँ जाना है जी। इसके लिए मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का शेड लिया था ताकि मैं उसकी जो आउटर वी है ना उसको थोड़ा डीपन आउट कर सकूं। ओके, देयर इज अ बिट मेसी। थोड़ा सा मेसी है। I had that sheet mask previously. I said that you can use to erase the mistakes. I'm gonna apply black color, और मैं black color जो ना वो इस स्पंज से ही अप्लाई करती हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि ब्रश से अप्लाई करने से ना वो हर तरफ उड़ जाता है, मुझे लगता है। So I apply black color with the kind of applicator that comes with eyeshadow palettes, और इससे हमने लाइनर अप्लाई कर दिया। I'm speechless. I love it. Now what I'm gonna do, blend it out even more. I like the hack. Yes, let's move on. So far so good. Time to set the face, और उसके लिए मैं यूज करी हूँ APK का compact. It's good. I like it. Contouring, I know I have done this before, और मैं इसी तरह ही cheekbone contouring करती हूँ because I have chubby face. And for nose contouring, I'm gonna take some product on my finger, rub it between my fingers, and apply it with my fingers, tips of my fingers. Doesn't make any difference, does it? Blend it out with a beauty blender. This does make your face look slimmer. See? For blush, I'm gonna use a stick, and आपने करना क्या है, आपने W shape में जाना है। Now I know my blush was not pigmented enough for the video, but in real life it was okay, it was bearable. बहुत ही nice और natural था। It's not that pigmented, but we're gonna set it with powder. First blend it with sponge, then go on top with your powder. ये थोड़ा नीचे ज़्यादा हो गया। Should have gone like this. Never mind, मैं कितने जा रही हूँ। Quickly highlighter. Same brush, no worries. I like it. I just stopped using highlighters. I don't know why. Now quickly let's do the eyebrows. अच्छा, और eyebrows की क्या amazing trick है, मैंने try नहीं की थी। I don't know why, because I'm not used to it. करना ये है कि आपने यूँ लाइन लगानी है नीचे स्ट्रेट, और फिर आपने ये लाइन को ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। और यहाँ से लाइन लेनी है यूँ हाफ से स्टार्ट करते हुए, और उसी लाइन में आपने मर्ज कर देना है। एक लाइन नीचे लाइक दिस, मेक एन आर्च, कम डाउन। इधर से लाइन यूँ लगानी है, आर्च को टच करना है, एंड देन मर्ज इट विद एन इवन आर्च like this. Let me use the cream side. I'm not a good eyebrow maker. I think it worked. Everything is working. Let's move on. Voila, I have applied lashes, liner, mascara, and everything. I think there's no hat for that anyhow. Let's move on to the last step, which is the lipstick. और आपने सबसे पहले लिप्स को लाइन करना है और उसको सर्कल की शेप बनाना है, like this.
It's supposed to make your lips pouty. Let's apply the lipstick. अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैंने ना एक लिपस्टिक की वीडियो शेयर की थी, आई विल लिंक दिस इन दिस आई बटन, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपस्टिक अप्लाई करने के तरीके थे. व्हेन यू अप्लाई लिपस्टिक आउटसाइड योर लिप्स, लिप लाइनर, और जब आप लिप लाइनर लिप्स के दरमियान में लगाते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट अप्लाई ऑन योर क्यूपिड्स बो एंड यू कीप इट राउंड, तो उससे आपके फेस पे कितना फर्क पड़ता है, आपकी मतलब लुक कंप्लीटली चेंज हो जाती है. सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट लिपस्टिक. एंड yeah, this is the whole one more thing left, and that is to set your makeup by applying setting spray on this sponge. आपने setting spray के जो है वो sponge पे अप्लाई करना है, और फिर आपने उससे अपना फेस जो है वो सेट करना है. दिस मेक्स सच अ गुड डिफरेंस, ट्रस्ट में. अगर आपकी आईज के नीचे केकी लग रहा है, आपको लग रहा है कि पाउडर अलग से उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ट्राई दिस हैक. दिस इज, ये आजमाया हुआ मेरा हैक है, एंड आई हैव ट्राई दिस इज अमेजिंग. सो या, दिस इज माई होल लुक कंप्लीटेड, एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन कैसी लगी आपको. हैव यू ट्राइड दीज वन ऑफ एनी ऑफ दिस trick or would you try any of this trick? और कैसे लग रहा है मेरा मेकअप, ओवर लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, अंडर लग रही हूँ. खैर, शादियों पे तो ऐसा ही होता है. सो या, दिस इज माय होल वीडियो. होप यू लाइक माय वीडियो. If you like, then don't forget to give it a thumbs up. Subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you. And before you leave, you can check out all these tricks and TikTok trends that I've tried before, and do let me know in the comment section, have you seen those or not. Thanks for watching, guys. Allah Hafiz.